So a very good evening to all of you. Now welcome to WIDYAKAR online classes. We are always not on time, ready and ever eager to serve you the best. Hope you are getting satisfaction. Okay. How are you all feeling now? Those who are preparing for OPSC PGT, how far your preparation has gone? So we've been covering it, and still we are 25 questions. We have already completed 75 questions, and 25 more questions are still left. Okay. Akshay Behera, Ranjita Pradhan, good evening. Good evening. Nice that you are all very sincere and regularly attending classes, because that is of paramount important. That's of paramount importance, that regularity in attending classes. जिते पढ़ जहाँ कर गोटे क्लास अटेंड कले जोटा जो तुम जी ग्रास्प कर अन्य को ये करें तुम निजे भाव हार्ड कॉपी गोटे बहीटे हार्ड कॉपी जेरॉक्स मटेरियल को पढ़ी मन रखा जिते पढ़ा जिते इजियर तुम सॉफ्ट कॉपी रे पढ़ा इज वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस कंपेयर कले बिकॉज कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल कर चलुव तो जहाँटा पढ़ी जाए अगेन से कनेक्शन हो न because mind be the it should be have that logical connection in the mind also. कि मु third line रे कौन पढ़ी थी, 7th line रे कौन पढ़ी थी, again scroll कला बेलू को I find it difficult. I do not know. You all belong to a very young generation, so you might be having you might not be having any difficulty at all. But I always find that a Xerox hard copy is any day better to a soft copy. Okay. Niroz, good evening. Okay, now listen, we have a individual offer of 20% in individual subject, and for Brahmastra and Trisakti we have flat 15%, and today is the last date. Today is 3rd April and today is the last date. Those who have not availed of this opportunity, you can easily avail the opportunity now. So 28th March to 3rd April was a special offer. Ssb TGT, PGT lecturer, OPSC PGT, RST, LSI, OSTET, OSSC, CGL, RI, ARI, Amina, BEd, JTS, OTET. So there is a special, it's a special offer of 20% off on individual subject, on individual, and flat 15% on both Brahmastra Power Pack and Trisakti Power Pack. Buy 3 courses together at rupees 3399. It is dirt cheap. 4000 टंका दीटा एलेन सोली शॉर्ट होची पिला माने पिंदुचंती, but you are getting a whole lot of information, whole lot of knowledge. Okay, then Sunday you have English and mathematics, 150 marathon classes, 150 MCQs will be discussed. Okay, and we have to our helpline numbers, most of you must be having, and if not, it is 809 307 3340. So our 2 helpline numbers are 809 307 3340, then 809, and this is 341, 340 and 341. These are the 2 helpline numbers. Any feedback, any problem you face or anything you are, please open your mind and judiciously karibo. Bias take lekhiwani, bias take kebe lekhiwani, jaha genuinely feel korcha seta lekhibo. Okay, your feedback or your problem or anything you want to, these are the 2 helpline numbers you can contact. The office is open from 10 AM to 7 PM, so you can contact within that time. Now,
Did he who made the lamb make thee? In this line from Tiger by William Blake, lamb is used as what? A, symbol, B, simile, C, irony, D, apostrophe. William Blake का जो Tiger, the famous, is a very philosophical poem. Tiger, tiger, burning bright. It's a wonderful poem by William Blake. So in that he has used, did he who made the lamb make thee? That means the God who had made the lamb, because Christian belief रे कौन अच्छी भगवान 7 दिन भितर समस्त क्रिएट कले, सी एनिमल्स टू आरंभ एक्वाटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, समस्त गॉड कंप्लीट कले क्रिएशन 7 days रे. So here he is asking this question, that the very God who had created the lamb, who stands for innocence, has also created you, because it is paradox रहुची. Lamb stands for कौन? Innocence. Tiger stands for what? Ferocity. Tiger टा सब कौन? Ferocious, नृशंस, भयंकर देखा जैसे. Lamb टा होची निरीह. So ferocity and innocence, these are two antithetical terms, two paradoxical terms, opposite terms. Okay. So lamb is used as a symbol because it is not a simile. Simile kahin ki nuhe? Because simile, it's a comparison between two dissimilar objects. Ita similar जोड़ा नुहे तांको भीतर जे comparison हुए और सेई लाइन रे गोटे word like थिबो किबा as थिबो तबे सेटा होची simile. So एठी किछि नै, एठी like नै कि as नै. Did he who made the lamb make thee? एठी like word नहीं कि as word नहीं, तो simile नुहे. अच्छा, irony is what? Irony is कि तमे जहा कहूच तमे मीन करनो सेटा. मु आपन को बहुत सहाय्य करी, आपन को पाखे पाखे सब बेले थिबी, किंतु तमे त से लोकटा को धोखा देवा मतलब रे अछ. ता माने कोन? तमे जो कथा कहूच एज अ फ्रेंड, यू आर नॉट दैट, यू आर नॉट अ फ्रेंड, यू आर प्लानिंग समथिंग एल्स. आयरनी होची डबल मीनिंग. तमे जहा कहूच ता मीनिंग इज समथिंग एल्स, तमे उद्देश्य अलगा. दैट इज कॉल्ड आयरनी. So we have verbal irony, we have situational irony, we have dramatic irony. So here is no irony. So ironic statement, irony ta koti use हुए सब बड़े. Irony is mostly you will find irony is used in satire. को genre देखो तो irony टा काम दबो सेटा होची satire. कारण satire होची एमती करिवो जे गोटे लोक को डायरेक्टली हर्ट करू नथिवो, किंतु भीतर भीतर ताको एमती से ठीक जानो तो से मते कहै छी, सेटा कहजी, सेटा कहंती सटायर. से जो सटायर है आयरनी टा होची सब बेस्ट वेपन. आयरनी जदी यूज करि परिबो भल रे तो से सटायरिस्ट सब तो इफेक्टिव सटायरिस्ट हो. कारण तमे जते जण लोक को गाली दोछ सब बळे तो खराब भाषा गाली दे परिबो डायरेक्ट, तन तमे ताको इनडायरेक्ट वे रे गाली दबो. से जो आयरनी रे यूज करा जे सटायर यूज हो. Apostrophe, you know everybody. Which of the following is an example of surrealist literature? A. The Time Machine by H.G. Wells. B. The Power and the Glory by Graham Greene. C. Franz Kafka's The Metamorphosis. D. Joseph Conrad's Heart of Darkness. Now, what is a surrealist? Surrealism. Surrealism. Realism होची वास्तवता जो. Something which is absolutely real, confined to the reality. तो आख पाख चारिपट जहाँ होची सेटा होची realism. Surrealism होची realism ऊपर को. त माने जोटा कि आमे जोटा को आमे कहिबु अवास्तव, न वास्तव, जोठी realism नाही. तो अवास्तवटा कोन बिए? अवास्तव माने not that it is absurd. वास्तव माने absurd मु कहूनी थी. इठी होची एमिति प्रकार गोटे लोक जिनस देखुथो तुमको सामना देखा जाउथो जे जोटा कि तमे जेंती सरियलिस्टिक कोटा जीवो. हैरी पॉटर किछि न समस्त हैरी पॉटर देखिथो, हैरी पॉटर फिल्म देखिथो, हैरी पॉटर बही भी पिला पढिथिबे. तने हैरी पॉटर जो मैजिक रियलिज्म देखौची, जण उडुची, जण एई सब जिनस एडा होची सरियलिस्ट, जहार कि रियलिज्म संगे लेना देना नहीं. किनु सरियलिस्टिक पेंटिंग, सरियलिस्टिक लिटरेचर टा एथि यूज हुए कि गोटे लोकटे मन करो आमे रियलिज्म रे कोन हुए
normally what happens in realism, आमे as a character, as an individual, आमे ता संगरे शामिल हे गलु, आमे ता संगरे आमे गोटे प्ले देखियो, ड्रामा देखियो गलु, बा फिल्म देखियो गलु, and that film is very very realistic. माने you see that माने आम नॉर्मल आमे आजकल जो सोशल इश्यूज ऊपर जो फिल्म गुड़ाक हो माने केमिति गोटे ऑनेस्ट लोकटे लाइफ सफर कर आमे देखुचे निजे जेते जे माने ब्राइब दउची जेते जे इलीगल काम करची इमोरल काम करची तार किछि असुविधा होने किंतु ऑनेस्ट लोकटा सबले हैरान होची दैट इज रियलिज्म. तो आमे से रियलिस्टिक गोटे फिल्म देखले बा जहा देखले आमे देखले ता भीतर आमे पूरा शामिल हे गलो, कनेक्टेड हे गलो, ता दुख ता प्रॉब्लम रे आमे दुख माने आमे भी चिंता कलो, ता दुख रे दुखी हेलु, ता सुख रे सुखी से किछि लाभ नै. इट हैज नो इंपैक्ट अपन देखले. तो सरियलिस्टिक लिटरेचर हला गोटे एमती गोटे जिनस तुमको स्टेज देखा जिवो जे तमे ता संग आइडेंटिफाई कर परिबनी किंतु तमे ऑडियंस का भीतर बसिकरी ताको तमे एनालिसिस कर परिबो. तमे जो ता संग शामिल हे जो तमे तले एनालिसिस कर परिबो, तमे जो इमोशनल स्टेट रे पड़े गलानी एंड तमे ता संग मिसी गलानी पूरा, ता दुख रे दुखी होचो, ता सुख रे सुखी होचो. तो तमे आ ऑब्जेक्टिवली इम्पार्शियली तमे ताको एनालिसिस करि पार. किंतु जेतले स्टेज बा स्क्रीन ऊपर अलगा जिनसटे रहउची जहा संगे तमे कस्मिन काले तमे निजकू करि परिबनी माने लाइक यू कैन नॉट आइडेंटिफाई से जगह कोन की तमे बसी के एनालिसिस करबे जे काहे की देखेला कोन काहे की एमती देखला सो तमे एटलीस्ट एनालिसिस करि पारि. सेटा होचे सरियलिस्टिक लिटरेचर. That is why artists, writers, they started experimenting with surrealism. Jemti, I think it's Eugene Ionesco's Rhinoceros. So Rhinoceros is a kon karchanti. He was a French. So Rhinoceros re से देखुछन समस्ते राइनोसरस कन्वर्ट हो जाउछन किंतु जणे जाउनी रेंजर जे मेन कैरेक्टर जे तार प्रोटैगनिस्ट हीरो से ही गोटी को लोक ये मेटामॉर्फोसिस से चेंज होने राइनोसरस ता होनी. एठी कोन हैला व्हाट इज द लाइक द राइनोसरस रो ऑब्जेक्ट मेसेज ता देबे कोन हैला गोटे स्टेज भाव मनीषटा गोटे बाघ हो जाउची, मनीषटा गोटे माने जिन जादू करिकरी मनीष गोटे बाघ हो जाउची, गोटे राइनोसरस हो जाउची, गोटे हाथी हो जाउची. तो एठी कोन से राइटर जो ड्रामाटिस्ट कोन देखिया चाहउचंती राइनस को से देखउचंती जे फैसिज्म नाजिज्म तो हिटलर मुसोलिनी कर चलथला जमाना प्रायर टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर. तो तांको भय रे ये फैसिज्म नाजिज्म को एम्ब्रेस न कला को बहुत टॉर्चर करा. तेणु लोक मान को ब्रेन वॉश करा गला, एमिति ब्रेन वॉश करा गला जे लोक समस्त कहले ना नाजिज्म फैसिज्म होची सबुट बेस्ट पृथ्वी राम समाज रे जत्ते ऑल द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व थ्रू दिस आइडियोलॉजी. अंडरस्टैंड. तो ए जो माने मूर्ख बळे समस्त बिलीव करि जिबाटा को कहंती. It is Ionesco shows that rhinoceros. So everybody is turning into a rhinoceros. जने लोक माने oppose करूची. No, that is not good. That is not good for the society. That is not good for the entire humanity. Dictatorship is never good for humanity. The modern world, democracy, human rights, freedom, basic human rights, which is the freedom, the rights that is guaranteed by the constitution of any country. ता बिना लोक बंची परिबनी. डिक्टेटरशिप हेले ए गुडा का सब बंद हो. You have no right, you have no freedom of expression. Understand? Surrealistic होची एटा. And that play had a tremendous impact. Okay? So, The Time Machine by H.G. Wells, a dystopian novel. Then, The Power and Glory of Graham Greene, British novelist. Franz Kafka's The Metamorphosis.
when the person turns into a metamorphosis, he turns into a beetle. Joseph Conrad's Heart of Darkness. The Polish English writer Joseph Conrad. So he wrote his novel Heart of Darkness, which is always treated as a post-colonial studies. Who defends Shakespeare's violation of the three dramatic unities? A. John Dryden, B. Samuel Johnson, C. S.T. Coleridge, D. Alexander Pope. So who defends Shakespeare's violation? In the preface to Shakespeare, the right answer is Samuel Johnson, B. In preface to Shakespeare, Samuel Johnson divides the entire essay into two parts. It was published in 1765, and how was the preface written? So Samuel Johnson Shakespeare को टाइम में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट एत सहज मिलू ना लाइफ टाइम बहुत कम पब्लिश होती बहुत तो जॉनसन ट्राइकल जॉनसन भारी मेटिकुलस लोक सब जिन को टेक्निक ठीक से देखती तो ही वांटेड कि शेक्सपियर को एते माने एडल्टरेटेड ये गुड़ा बाहर एडिशन गुड़ाक बाहर किए मन इच्छा ये पेज पुरे दौरान मन इच्छा डायलॉग पुरे दौरान ओरिजिनल टेक्स्ट को मुझे केमती आनिबी so it requires a lot of time and money also. So he gave a proposal. कि मु पैसा मत दियो मत किसी सब डोनेशन दियो तो डोनेशन देला पर मु एई काम एते बड़ कामटे हाथ को नेबी चेष्टा करबी शेक्सपियर प्रति जस्टिस करबी and try to get all the try to be as original as possible. Original text संगे समान माने क्लोज आसिया को चेष्टा करी एंड शेक्सपियर को सब मन इच्छा जो एडिशन बाहर केते गुडे ऑथेंटिक केते गुडे ऑथेंटिक भी नुहे केते रियल केते फेक एंड जॉनसन प्रॉमिस मते पैसा देला पर मु गोटे वर्ष भीतर ताको काम सार दे के बहिटा पब्लिश कर देबी किंतु जॉनसन को बहुत लोग पैसा देछन he got a lot of money for that. He in fact got a large sum of money किंतु से लिखि पारे 1 year कहते टाइम देते but so there was a poet called Charles Churchill, so he started criticizing Johnson पैसा पाइगला आराम से बस पड़ला करनी किछि तापर जॉनसन ट्राई he worked very hard and finally 9 वर्ष ताको लागिला ताको कंप्लीट it took him 9 years to complete that preface. So, and it was published in 1765 by Samuel Johnson. So Johnson is, and it became the landmark in literary criticism. Dr. Johnson's edition of Shakespeare. And Alexander Pope Shakespeare लिखते हैं यार शोड़ा बहुत भूल भाल करते हैं तो तांको पोप को तो अलेक्जेंडर पोप को कहीं क्रिटिसाइज कर पर क्रिटिसाइज कले से तुमको चीरी देवे पूरा एनीवे सो इन प्रीफेस टू शेक्सपियर सब बेले कोन हिति ना शेक्सपियर को फॉल्ट्स गुडा केते लोक देखो नथिले बट जॉनसन कोन कले ना शेक्सपियर को ड्रॉबैक्स जति फॉल्ट जति लिखिले पहिले और जोड़ा तांकर ग्रेट पॉइंट्स for which he should be praised dita tanga dekhle tanga merits demerits dita tanga channel so शेक्सपियर को लोक माने क्रिटिसाइज करछंती जे सी क्लासिकल ड्रामा रो जो 3 यूनिटीज ऑफ प्लेस यूनिटीज ऑफ टाइम यूनिटी ऑफ एक्शन शेक्सपियर को किछि मेंटेन करि ना जॉनसन शेक्सपियर को डिफेंड करछंती तांको सपोर्ट रे कहउछंती जे शेक्सपियर what he did कि शेक्सपियर जो शेक्सपियर मोस्टली हिस्टोरिकल प्लेस लिखछंती ट्रेजेडी लिखछंती कॉमेडी लिखछंती so in the 3 concept हिस्टोरिकल प्ले रे तमे यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस रखि पारिबो नाही इट इज इम्पॉसिबल रहिला यूनिटी ऑफ एक्शन शेक्सपियर को यूनिटी ऑफ एक्शन अछि काना तांका प्लॉट ता जो वे रे डेवलप करिछि and it has come to ठीक justify करछि the conclusion को
So Shakespeare most important jinsa ta ko maintain karchen, that is unity of action, and Shakespeare is justified तांको से डिफेंड करछंती जे से वायोलेट कले भी ही इज जस्टिफाइड इन द वायोलेशन, सेमती किछि खास अपराध से करि नांती, एंड ही हैज प्रोड्यूस वंडरफुल वर्क. So John Dryden, Samuel Johnson, S.T. Coleridge, Alexander Pope. The right option is Samuel Johnson. The Fisher King and Quest for the Holy Grail are the underlying myths that provide a framework for one of the poetical works of T.S. Eliot. Identify the word. The co-work रे T.S. Eliot करो. The Fisher King myth, जोटिकी it was a barren sterile land, and the Holy Grail. जो Holy Grail को quest रे आर्थर कर नाइट्स माने बाहरी थिले. जो Holy Grail टा होची गोटे कप जोटिकी जीसस तांकर लास्ट सपर रे से कप को पी जोटी की तांकर ब्लड टाको पकाई तांको द ब्लड विज कलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड दैट कप, दैट इज कॉल्ड द होली ग्रेल. देन से होली ग्रेल माने कोन माने आमे जेंती गोटे ताबिज ने पिंधु कोन को जने संथंकर हो कि को जने कर गोटे को ठाकुरंकर जगन्नाथ गोटे फूल पूजा को फूलटे पड़गला, तुम से फूलटा गोटे डबारे रखिक सब रखिव, परीक्षा बेले गला बेले से फूलटा धरी जाइथिव. A belief that is going to bring about a great change. Okay, so in which poem of T.S. Eliot these myths are used? The Holy Grail and the Fisher King myth. That is the A. Holloman, B. Gerontian, C. Four Quarters, D. The Westland. Eta hochi the Westland. Westland bharti allusions. The Fisher King myth, Holy Grail, Spencer, Shakespeare, समस्त को से आनिछन Westland. A literary device that means expression of doubt or uncertainty is A. aporia, B. anticlimax, C. foregrounding, D. rhetorical question. That is A. aporia. Aporia means it is an expression of doubt. जो तुम अनसर्टेनिटी डाउट रोची से जगह ताको कहती. Who is often referred to by literary historians as the father of expressionism? A. Eugene O'Neill, B. Elmer Rice, C. August Strindberg, D. William Lewis. It is August Strindberg. August Strindberg first used expressionism. So what is expressionism? बेसी दिन लास्ट कलानी लेटर ऑन यूजिन ओनिल यूज करछंती तांको टू इन्फ्लुएंस्ड हेकरी. इट्स अ जर्मन ये. तो एक्सप्रेशनिज्म हला तमर इंटरनल साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम तमर होची मन भितरे जो साइकोलॉजिकल जिंस ताकू तमे केमिति स्टेज रे देखे माने फिल्म रे कोन आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ी गलानी तम भीतर एंटायर फीलिंग्स टाको तमे जने देखै परिबो. तमर कॉन्साइंस तमर हठात कर गोटे फिगरटा देखा जाउथो जे कहउथबे ए काम करना भूल होची सेटा होची तमर विवेक. सो दैट कैन बी शोन इन मॉडर्न डेज, बट इन दोज डेज सो थ्रू एक्सप्रेशनिज्म टेक्निक माने गोटे लाइट सब गोटे लाइट धपधप होतबो किंबा कि जो गोटे खाली ड्रम बाडेउथबो एगोडा सब टेक्निक. दैट मीन्स एटा होची मनुष्यर अनसर्टेनिटी, मनुष्यर मन भीतर जो द केओस, द डिलेमा यू आर हैविंग, द्वंद्व तम भितरे सेटा को केमिति एक्सप्रेस करबो. So who is the father of expressionism? It is August Strindberg, and he was greatly Eugene O'Neill, the American playwright, the first American playwright to get a Nobel Prize. So Eugene O'Neill was immensely, hugely influenced by August Strindberg. Now, read the following poem and answer the questions that follow. When God at first made man, having a glass of blessings standing by, let us, said he, pour on him all we can. Let the world's riches which dispersed lie contract into a span. So strength first made a way. George Herbert ka Pulli poem ta, the Pulli. Herbert a metaphysical poet, but mostly he is a religious poet. He did not write much about love. So when God at first made man, when God made man,
तो गॉड गोटे ग्लास रे ब्लेसिंग सब रखते तो सब ब्लेसिंग्स लोक को दे चलले तो व्हाट ही गेव फर्स्ट pour on him all we can जहाँ हमें दे पारिबा लोक को दे मनीष को से दबा let the world's riches means wealth money which disperse like contract into span जिते अच्छी world riches तक एकाठी गुट जगह करके तो सब दे दवा so strength first made its way प्रथम की आसला God gave strength first देले God लोगों को strength देले then number 2 beauty number 3 wisdom to honor pleasure when almost all was out that means wisdom देले बुद्धि देले pleasure देले happiness देले सब जिनस दे देले पैसा देले but when almost all was out God made a stay God से गोटे ब्रेक लगे ना 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 सब जिनस लोक जो देदेवी से लोक निज मनीष निज कौन ना कौन भावी नब perceiving that alone of all his treasure rest in the bottom भगवान को जो एंटायर गिफ्ट ब्लेसिंग्स मनीष को दौले वन बाय वन तांकर लिस्ट रे बकेट लिस्ट रे एकदम लास्ट रे थिला रेस्ट सब देला पर से रेस्ट था थिला भगवान कहले ना आकु ए गोटी को जिंस रखि दे एंड व्हाई डिड गॉड डू दिस फॉर इफ आई शुड सेड ही bestow this jewel so it jewel ta ke rest this jewel means this particular blessing which is rest also on my creature he would adore my gifts जदि मु ताकू रेस्ट तक भी दे देली से कोन करिवो ना से मो कथा भाबिबो ने कदे मोर गुणगान गाय गुणगान करिवोनी so he will the gifts रो गुणगान करिवा आरंभ कर so in the process what will happen man will never think of God तो मनीष और भगवान को गैप हो मनीष भगवान को कथा भाविबो yet let him keep the rest but keep them with repining restless it is a wonderful line let him keep the rest एटी रेस्ट कौन रेस्ट माने विश्राम नुहे एटी रेस्ट होची बाकी तक तो सब जगह बाकी तक जो देची ब्लेसिंग्स let man keep that but keep them with repining restless सब थाई करी सब बेले रेस्टलेस थिबो विचलित थिबो कोठी शांति पाउ नथिबो तो एई मेंटल स्टेट रे जते मनुष्य सब बेले रहिबो सेते बेले से भगवान कथा भाबिबो when the man will be in crisis when the man will be in conflict in dilemma he will have no solution सेते बेले man will think of God so but keep them with repining restlessness let him be rich and weary let him have enough money and let him be tired that at least if goodness lead him not yet weariness may toss him too much जदि भल बनिष्ठ हेतिबो भल लोकटे हेतिबो से भगवान कथा आपे चिंता करिवो जदि तार गुडनेस नाही गोटे इविल कैरेक्टर गोटे शैतानटे अछि बदमाशटे अछि गोटे एंटी सोशलटे अछि गोटे मर्डररटे तार गुडनेस नहीं so God says if a good man will always come to me a man who has met ethical values moral values will always like always praise God for all his gifts for all his blessings किंतु जदि जे गोटे सोशल अच्छी मर्डरटे अच्छी जार इमोरल कैरेक्टर जार ये केते भगवान जुदे when he will be in crisis so he is weariness tired सेते तो भगवान मत उद्धार कर टायर्डनेस रेस्ट जदि मुझे देविनी केते बेले भी टायर्ड हेकरी मागिबो भगवान मत ये फुर्सत दियो मु टिके बसे केते मु दौड़ीबी जो माने I have read the biography and I have read the narratives of many those who have what world famous choro so man देखछन टायर्ड माने एठी दौड़ू सेठी दौड़ एठी पुलिस को माने चकमा दे दौड़ू पर के एक्सट्रीमली टायर्ड हे जानती आ सेटा फिल्म थिला संजय दत्तर वास्तव फिल्म टा को माने 7 to 8 times देखी फिल्म टा इट्स सच ए वंडरफुल मूवी पूरा रियलिस्टिक माने एंटी सोशल माने प्रकृति रे सेल कहि ता मां पाख रे लास्ट रे कहछि जे सब बेले पुलिस को सब बेले पुलिस संगे डर
पुलिस को उठो दूरे दूरे दौड़ी 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 मुझे पूरा थकी गली आ मोर ना मोर शक्ति ना कि किसी ना कि मत टिके तो कोल खाली मत रेस्ट दे दैट इज व्हाट ही टेल्स हिज मदर exactly that happens with those criminals exactly happens with those. Herbert says that those who do not have proper moral values, they will think of me, they will pray me, they will turn to me when they are totally tired of the life, totally tired of everything. At that point of time they will come to me. That is the reason why God kept rest, withhold rest ଆଉ ବାକି ସବୁ ଦେଇଦେଲେ. Now ଶୁଣ ଆଗରୁ comprehension passage ପଢି ଯାଉଥିଲା, prose passage को analysis करी answer बाहर करबा easier, but poetry passage को पारिबा is difficult. एटा कोन जॉर्ज हर्बर्ट को पुलिटा होचे very very easy poem, ताको तमे जणे इजीली कर परबा. टिके ट्रिकी डिफिकल्ट पोएम पढ़ले, सपोज ब्लैक कर टाइगर पढ़िबो टाइगर पोएम पे, तार क्वेश्चन आंसर लिखिया बहुत कष्ट. एनीवे, हाउ इज गॉड कैरेक्टराइज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा? ए, God is almighty. B, God is generous. C, God is drunk with power. D, God loves his creation. So the right option is what? God is almighty, God is all powerful. So all powerful देखो नहीं. God is generous. Generous माने कौन? दिलदार. इटी God is दिलदार. God तक ग्लास जहाँ blessings सब दे गले. दियो इटा दियो सेटा दियो सेटा दियो. So that means God is दिलदार. God is generous. Option B. Next question. How is God characterized in the first stanza? Oh, sorry, God is generous. Option B is the right answer. How are the ideas in first two stanzas structured? A, in contrast and comparison. B, at random. C, in chronological order. D, from particular to general. What does these options? The first two stanzas are God gave one by one everything. Do you find any comparison and contrast? Similar and dissimilar of things? No. God said, I have created man, I want to give some blessings. Tapare God one by one blessings de gale. Riches dele, wisdom dele, knowledge dele. One by one se chronological order dele. So the right option is in chronological order. गोटे ऑर्डर रे वन बाय वन दे चलले सेही तांके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे एकदम लास्ट रे थिला बॉटम रे थिला रेस्ट से सब देला पर से रेस्ट अटके देले. रैंडम माने कोन? रैंडम माने 1 2 3 4 नय कि 3 7 4 2 एमती रैंडम ऑर्डर, जोटी गोटे क्रोनोलॉजिकल सिस्टमैटिक ऑर्डर नाही, लीनियर फैशन नाही, ता कोनते जोटी नाही सेटा कोनते रैंडम. अच्छा, from particular to general. What is a particular to general? Particular to general होची माने you take suppose सब आमर कौन हुए जितने फिल्म तुम देखुचो, the film always tells a story about a family, a particular family. The particular family members तांकर problem तांकर struggle ताकू देखो देखो तमे देखो जे आम समस्त को स्टोरी से रही. You find that all of us we share the same story. जहाँ देखो आमर समस्त को स्टोरी भी सैया. तो ये कौन है पर्टिकुलर फैमिली रो स्टोरी टा यूनिवर्सल स्टोरी है गला, समस्ते ता भितरे समस्ते कनेक्ट कले से स्टोरी संगे ताको कहती पर्टिकुलर टू जनरल. जोटा कि शेक्सपियर आ भितर ही इज अ मास्टर इन पर्टिकुलर टू जनरल. व्हेन ही शोज ओथेलो ए सस्पिशियस जेलस कैरेक्टर, it becomes a universal thing. It is not only one Othello. World सारा सबु लोकों पाखे jealousy अच्छी, सबु लोको suspicious माने संदेह करंती, suspect करंती, किंतु किए अधिका करे किए कम करे. Next, what is the central theme of the poem? A, God is not too indulgent to spoil man with his blessings. B, man adores world's riches. C, man looks forward to God's blessings. D, man depends on God for his survival. So what is the central theme of the poem?
It is option A is the right answer. God is not too indulgent. Too ta सब को negative रे use रे. That means God is not so very indulgent. Indulgent माने like तमे पूरा पूरी focused है सब रहिबो. माने indulgent parents सब बेले पिलाटा को तार प्रति मूवमेंट पिलार प्रत्येक जिनस को से देखती से कहते डोटिंग पेरेंट्स छुआ कथा थोड़ा आउ कहीं संसार ना सो इंडलजेंट ताकि कहती सो हियर गॉड इज नॉट टू इंडलजेंट टू स्पॉइल मैन विथ हिज ब्लेसिंग so God is not that kind of a doting God or an indulgent God जे I will by giving everything to man I'll spoil human. God is judicious. God has applied his common sense. God has applied his wisdom and finally found से analysis करछंती जदि मो मनीष को सब किछि दे देबी मनीष से जिंस पाई कि एते खुशी हे जो जे से मते ही भूली जीवो तेणु एमती गोटे जिनस रखिथिबी जेमिति कि मनीष मते सब बेले मन पकाउथिबो वो कथा सब बेले भाबुथि. What does alone of all his treasure in line 9 refer to? A. Beauty, B. Rest, C. Honor, D. Wisdom. A very easy question. It is rest. क्या गोटे ऑर्डर रे दे चलले riches पैसा देले वेल्थ देले तापर देन कम ब्यूटी ब्यूटी पर आसला विजडम ऑनर एगो सब दे दी गले अल्टीमेटली लास्ट रे कोटा थिला तंकर ब्लेसिंग रो जो लिस्ट रो लास्ट रे थिला rest. So rest is alone of all his treasure is the only one out of all his treasure in line 9 refers to rest. God likes to control humans by keeping them A. away from evil, B. poor, C. alone, D. without rest. How does God exercises his control over human beings? By withholding rest. It is away from evil nahi, poor, alone kichhi no, it is without rest. If you don't give him rest, the rest पे मत खोजियो. Which word in this poem acts as a pun? Pun माने a word having double meaning. A word having double meaning हो तो कहते pun. So it किए A poor, B alone, C rest, D losers. तो कहार डबल मीनिंग अच्छी एंटायर पोएम रे इज रेस्ट रेस्ट जोड़े मीनिंग रेस्ट रो दीटा मीनिंग ओडिया कोन गोटे हला विश्राम आ गोटे हला बाकी बाकी तक रेस्ट तमे नहीं जा बाकी तक तमे नहीं जा सो रेस्ट हैज टू मीनिंग्स हियर गोटे हला टेक रेस्ट विश्राम नबा आ गोटे हला व्हाटएवर इज लेफ्ट. The word which has two meanings in the poem, it is the word rest. Which is the dominant imagery in the poem? Quote a dominant imagery, most important significant imagery se poem raj. A. wealth, B. goodness, C. God, D. nature. So dominant imagery is not nature, not God. God tang blessings douchanti. Goodness, it is wealth. Among all his treasures, what is treasure? Treasure is wealth. What does this jewel in line 12 refer to? A. wisdom, B. glass of blessings, C. rest, D. my creature. It is jewel ki hai? Jewel is rest. The option C, that is rest. We can infer that the speaker in the poem is A. extravagant, B. malicious, C. selfish, D. judicious. Who is the speaker? God is saying that I am giving all these things. So God is extravagant. Extravagant कहा कहती ये बद खर्ची मन इच्छा ये न भाविक उड़ाए पैसा extravagant. God is not that. God धीरे धीरे गोटे गोटे दौरान. Malicious होची having an evil intention. God is great. God does not have any evil intention against man. God is not selfish. यदि selfish थांते भगवान एते जिनस मनुष्य केबे देई न थांते भगवान तांग भंडार भरपूर
बहुत लोक खाली जी जुआड़े जिते जाए तो भगवान को कौन मागे? जस्ट टेल मी, तुम जो मंदिर को जाओ जो जाओ तुम सका उठी भगवान को कौन माग? लाइन 9 को जी कौन मु पछू जी पोएम टाक तुम निजे देख फुली पोएम टा काढ़ी थून कहीं निज आगे समस्त आगे फोन अच्छे देख फुली पोएम टाक. So it is God is judicious. God applies his common sense. God बहुत भाभी चिंती के से देछन. So it is judicious. Then question number 90. The first and last lines of each stanza are written in A. Iambic pentameter, B. Iambic trimeter, C. trochaic trimeter, D. dactylic trimeter. It is iambic trimeter. ये 5टा मीटर नहीं, ये 3टा मीटर. Like, let me go back to the poem. You told me, Nero's, that line number 19. Dekho, when God at first made man, having a glass of blessing standing by, let us, said he, pour on him all we can. That means एटा होचे God is generous. हमें जहाँ दे पारिबा कथा दे पारिबा सबु दियो. Let the world's riches which dispersed lie contract into a span. So strength first gala, then beauty, then wisdom, तापर honor, to pleasure. One by one. What a chronological sequence is dale. When almost all was out, God made a stay, perceiving that alone of all his treasure rest in the bottom. So ये सबु जिनस को से कौन को आई treasure को आई wealth, and rest is always at the bottom. Rest was bottom. हमर होची मैं toss him to my breast. एटा होची iambic trimeter. iambic माने कौन? iambic होची गोटे हला unstressed, तापर हला गोटे unstressed stressed. एटाटे गोटे, एटा गोटे ट्राइमीटर. जेतरे 5टा हेतबो सेटा हबो पेंटामीटर. So Herbert used iambic trimeter in the last line. Now let us do some grammar questions. Farmers of my village dash organic farming 2 years ago. The correct form of the verb is A. had adopted, B. have adopted, C. adopted, D. have been adopting. Which is the right answer? Grammar at least tome kuh. 11. ताको गूगल न देखिकरी निजे कुह. Farmers of my village dash organic farming 2 years ago. Adopted kahin ki hela? Tell me. Grammar is just like mathematics. It has a formula. Why it is adopted? The clue or the tree, the word is 2 years ago. When a specific time is time in the past is mentioned, sei jagara haba simple past. Last night, but a specific time, yesterday, 2020, 2011, but a specific time jetal diya hochi, seta hochi simple past. So ethi hochi they adopted organic farming 2 years ago. 2 ବର୍ଷ ତଳେ they adopted ago. ए word गुड़ाक होची सबु past tense, simple past. So option C is the right answer.
Next. The manure they get is insufficient dash the needs. Which is the appropriate preposition? To, A to, B for, C with, D in. Sufficient, insufficient रे कौन preposition लगे? Preposition सब बड़े जानता है जितनी की rules अच्छी preposition टा को केवल practice रे तमें कर पाएं practice रे ही तमें कर पाएं वो पेड़ा sufficient नहीं है वो पाई मैंने कौन for it is not sufficient for me it is insufficient for me अल्प खाइबा थुआई ची इटा insufficient for me so it is option B is the right answer. It is insufficient for the needs. They dash depend on rain earlier, but these days they have borewell facilities. The correct modal is A should, B would, C must, D used to. Modal कौन? Modals are auxiliary verbs which always refer to some mood. जो कि मॉडल रो कैन कुड शैल शुड मे माइट विल वुड रहिबो तार अदर फॉर्म्स ऑफ तार अदर वर्बल फॉर्म्स नहीं मॉडल गुडा आई कैन डू इट दे कुड डू इट ओके तो एटा होची ऑप्शन डी दे यूज्ड टू डिपेंड आगुरु से माने रेन ऊपर डिपेंड करथिला अर्लियर but these days they have borewell facilities. The correct model is used to. कहना आपको भी तमें elimination process of elimination करी परिबो. Should रो माने कौन? Should as a model कौन? आजिकली shall ता use होनी. Shall should use. Mostly will would रे रही जाउची. Should माने कौन? परिबा दरकार. Should और must भीतर कौन difference रहिला? शुड गोटे होची करवा निहाती दरकार आउगला मस्ट शुड होची एटा गोटे प्रकार रो सजेशन तमे दउछ जणे तुम घर को गला से तुमको कहूची जे यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स माने तमर बापा मां को रेस्पेक्ट करबा उचित आउ जणे कहबो यू मस्ट रेस्पेक्ट दैट मीन एटी होची कोन पूरा पूरी एम्फोसिस दे कहुचे तुम अलग कौन सी चारा नहीं यू मस्ट ये जड़े सजेसन दौर ये जबरदस्ती तुमको कहूँ करवा दरकार मस्ट और शुड भीतर डिफरेंस मस्ट रे गोटे जबरदस्त जिनसटे अच्छी और शुड रे इट्स अ सजेशन तुम सजेशन रखिपार न रखिपार यू शुड गेट अप एट 5 o'clock सजेशन देला वो 5टा बेले उठी पारे उठी न भी पारे जिते बेले कह यू मस्ट गेट अप एट 5 o'clock you have to get up at 5 o'clock. That is the difference between should and must. They no longer yield to the vagaries of monsoon. The underlined verb can be replaced by they no longer yield to the vagaries of monsoon. The underlined verb can be replaced by A. Carry on, B. Give in, C. Put off, D. Go through. These are all phrasal verbs. All these are phrasal verbs. Phrasal verbs are what? Go through. Verb plus a preposition or an adverb. This is phrasal verbs. So, it's a phrase. More than one word is a phrase. So, carry is a verb, on is a preposition. Give is a verb, in is the preposition. Put is the word, off is again another preposition. Go is a verb and through is also preposition. So, option B is the right answer. Yield माने कौन? I give in माने I yield करिबु surrender कली और I accept it. ताकि कौन थी yield. You yield to pressure. जने तम ऊपर pressure पके चलची तमे ताको अटके पारुनो. तमें सकम करी जाउछ ताको कहंती yield तार phrasal verb हैला give
सुनो फ्रेजल वर्ब कला बेले मोस्टली तो देखिबो गिव ब्रेक लुक एई वर्ड गुडा कर जेते फ्रेजल वर्ब्स अछि लुक अप लुक आफ्टर लुक इनटू लुक एट एई गुडा को बेसी करिवो ब्रेक लुक गिव टेक सात आठटा वर्ड नहीं जीवो तुम जो +2 अच्छी ग्रामर बहीटा अच्छी इनविटेशन इंग्लिश ग्रुप बुक 4 तो बुक 4 रे जो वर्ड्स गुड़ाक अच्छी से देखले इनफ you will get the phrasal verbs right problem किछ हवा ओके carry on माने कौन I carried on with the process or continue करी with the process go through माने examine the collector is examining the file the collector is going through the file I'll go through the file I'll go through your note तापर put off माने ई टेंस अछि put off I was really put off माने मो मूड ऑफ हे गला ताकू put off कहि परबो आ गोटे put off put out put off or you can postpone something so put off ता तीन चारटा मीनिंग रे भी यूज हो they don't suffer for lack of funds dash they get bank loans easily the correct linking particle is a though b and c therefore d since oh what as with they don't suffer for lack of एगोटा को easily केम जानि प जानछ दीटा जक सेंटेंस देखिबो a complex sentence दीटा सेंटेंस देखिबो don't suffer एटा गोटे सेंटेंस आउला they get bank loans easy सबले दीटा सेंटेंस को देखिबो रीजन रिजल्ट होची ना नाही कंट्रास्ट रहउची की तो एमती देखिबो व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द रिजल्ट इट रीजन कोन काहे कि दे डोंट रिजल्ट होची दे डोंट सफर फॉर फंड्स रिजल्ट ओ पैसा सफर करनती फंड पे बिकॉज तांको फंड ता पैसा इजीली मिल जाउची बैंक रो दे बिकॉज दे आर गेटिंग बैंक लोन्स इजीली बिकॉज दे आर गेटिंग बैंक लोन्स इजीली they don't suffer for lack of funds eta hala reason ar eta hala tar result okay so reason result सबले तुम देखिबो सेठी लागिबो since जेहेतु से माने since they are getting bank loans easily they don't suffer for lack of funds so एगोला सब होला subordinating conjunction which of the following is a grammatically correct sentence a farmer as well as his sons work hard for a good harvest b a farmer as well as his sons are working hard for a good harvest c a farmer as well as his sons works hard for a good harvest d a farmer as well as his sons have been working hard for a good harvest which is the right answer हमें देखिए बता one by one let us see a farmer as well as his sons the farmer आता woman work hard for a good harvest so a sentence a रे why it is grammatically not correct हमें देखुचु as long as along with that is a preposition so ए जो जिनस as well as रे ए आर सब्जेक्ट टा के sons हमें एमती मन रखू कौन as well as along with एवडा लागले सिंगुलर हबो काहे के सिंगुलर सब बेले खोजी दबो वर्ब रो सब्जेक्ट की सेंटेंस रे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस यू हैव टू नोटिस इज वर्ब टा किए वर्ब को प्रथम यू हैव टू फाइंड आउट वर्ब रो थाए कोन सब्जेक्ट थाए वर्ब रो ऑब्जेक्ट थाए आउ जनकर ऑब्जेक्ट थाए दैट इज प्रीपोजिशन ए प्रीपोजिशन also has
an object. Verb रो subject object थाए, prepositions रो केवल object थाए. Now सब जाक subject object they have to be either a noun or a pronoun. तमे आउ को part of speech हे परिबे नाही. Either से गोटे noun हेतिबो किंबा गोटे pronoun हेतिबो. तेणु आमर noun पूर्व सब कौन लगे? Mostly you will find articles. Definite article, indefinite article. A an होची indefinite article, the होची definite article. Okay? So एठी कौन होची? अ लगला indefinite article. So एटा कौन? This is the noun. Farmer. So this is the noun and this is the subject. This is the subject of the sentence. Now eta hala tara and it is a noun. It's a common noun. Farmer होची कौन? It's a common noun. So गोटे entire farmer class को बुझाउची. So a farmer. So as होची कौन? Is a preposition. So तारो एटा होची his sons. It is son ता कहारो object. It is not a part of the subject. It is the object of the preposition. The preposition is object. तेणु आर सब्जेक्ट संगे लेना देना नहीं. तेणु जेहेतु फार्मर होची सिंगुलर इठी हबो कि वर्क जगह वर्क्स. जेहेतु वर्क्स नहीं इट इज वर्क लिखाई छी. दैट इज द रीजन व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. बुझी परछ ना नहीं? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. A farmer as well as his sons are working again. Are working is boon again boon. A farmer is singular. It are nahi is habo. So this is also wrong. See, a farmer as well as his sons works hard for a good harvest. So it is absolutely grammatically correct. B, a farmer as well as his sons have again have to is plural. It has habo haba katha. This is also wrong. So option C is the right. If a farmer dash the correct verb is a good price for his produce, he will live comfortably. So A got, B would get, C will get, D gets. It is option D is the right answer. Why it is the right answer? Because this is a conditional sentence. If conditional sentence gote. If achi mane gote conditional sentence. So conditional sentence amar ketata condition achi? Chatta condition, zero condition gote. Forget it. Taku chhadi diyo. First condition, second condition, third condition. So conditional sentence I always advise students कंडीशनल सेंटेंस तीनोटी सेंटेंस केवल मन रखिदेव. तीनोटी सेंटेंस मन रख. बैंक परीक्षा हो जो परीक्षा हो सब बेले कंडीशनल सेंटेंस दीटा वर्ब थाए. गोटे मेन क्लॉज गोटे है सबऑर्डिनेट क्लॉज. अच्छा तो कंडीशनल सेंटेंस रे जदि मेन क्लॉज रो वर्ब दे देथिबो तुमको कहा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रो कंडीशन सबऑर्डिनेट क्लॉज रो वर्ब बाहर करो. सबऑर्डिनेट देथिले कहबे मेन टाक बाहर कर. तो दीटा वर्ब रो गोटे वर्ब दिया था आर वर्ब पे दिया ही न था. ओके तो फर्स्ट कंडीशन रही कौन? ओपन कंडीशन. ओपन कंडीशन कौन ना सबऑर्डिनेट. सो एठी सबऑर्डिनेट क्लॉज रे इफ क्लॉज जोठी सेठी फर्स्ट कंडीशन ओपन कंडीशन. ओपन कंडीशन होइछ कौन ना एनी कंडीशन जहार कि 50-50 चांस अछि कंडीशन फुलफिल हबार हे पारे न भी हे पारे. तेणु एटा जे ओपन कंडीशन. जदि से मानको गुड प्राइस फॉर हिज प्रोड्यूस ही विल लिव कंफर्टेबली. ताकू जदि एमएसपी भलो दब एमएसपी बढ़िया दब तो फार्मर कैन लिव ए फार्मर कैन लिव कंफर्टेबली. तो एमएसपी देले जैसे रहइबो. एमएसपी न देले तो दुखर रहइबो. एमएसपी देले तो सुखर रहइबो. तो तार हैप्पीनेस और तार मिजरी डिपेंड करुच्ची तुम एमएसपी जने भल एमएसपी दे पारे.
आम तो देखु इंडिया रे किंतु फार्मर प्रोटेस्ट होची एंड इट इज ट्रू द मिडलमैन द ब्रोकर गेट्स द मनी द फार्मर द पुअर प्रोड्यूसर he always suffers so if it is first condition open condition jar ki माने fulfill our chances 50-50 fulfill हे पारे if it rains I will not go tuition coaching class को जिबिनी वर्षा हेले जिबिनी वर्षा न हेले जिबी that means यदि वर्षा न हेले जिबी जदि वर्षा हेले जिबिनी so 50% chance थाए fulfill हवार that is open condition तो तार काम हला एटा गोटिक जिंस एटा हला सबुले will plus verb first form एटा रहबो present tense रे second condition हला like if I knew her address I would go मु तो एड्रेस जानी थिले मु जिबी आउ गोटे हला would have that means it is absolutely improbable से मते डाकी थिले मु जाई थांता एंटायर इंसिडेंट सब सॉरी लास्ट माने ऑलरेडी द मैटर इज ओवर से रिपीट हवार चांस नाही रिपीट हवार चांस नाही सेटा छि थर्ड कंडीशन तो सेठी लागे कोन इफ ही हैड इनवाइटेड हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस रे पास्ट परफेक्ट सेटा हबो वुड हैव कुड हैव डन वुड हैव गॉन मस्ट हैव गॉन तीनोटी सेंटेंस मन रखले यू कैन इजीली गेट ऑल द कंडीशनल सेंटेंस राइट ताको एते कंफ्यूज हबा इम्प्रोबेबल हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एते गुडी जिंस मन रा किछि दरकार तो एठी कोन हला जोडे दीटा वर्ब तो विल लिव अछि विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म अछि तो ऑब्वियसली आते कोन हबो आटा हो गेट प्रेजेंट टेंस हबो गेट्स द फार्मर सिंगुलर सो इफ अ फार्मर गेट्स already got a verb दे दी छी आरो verb पाइबा अति इजी I have always told the students जे केभे मु जते प्लस 2 पिलां पढौतली भी इवन तो सेते बडे मु कहउतली पिला मानकू जे तमे केभे कंडीशनल सेंटेंस रे कंफ्यूज हो नाही तीनोटी सेंटेंस मन रखियो गोटे verb देता आरो verb त देई न थाए जदी देखलो I would if I knew your address I would go it would like a simple past तारपटे न्यू बेटा टाइप 2 कंडीशन एनीवे ग्रामर पढ़े परिंदो ए फार्मर ऑलवेज सेज टू हिज सन नीदर ए बोरोर नॉर ए लेंडर बी दिस सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच हमर जानि छ इट्स वेरी फंडामेंटल जिंस रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच ता डिपेंड करे रिपोर्टेड वर्ब रो टेंस ऊपर यदि रिपोर्टेड वर्ब टेंस ता प्रेजेंट टेंस रो अछि reported speech verb tense change हुए नहीं if it is the past tense reported verb past tense थिबो तो तार reported verb tense ता accordingly change हबो past tense रे हबो जे आगुरु past tense अछि past perfect हबो एठी कोन ए farmer always says एठी present tense रे अछि says so reported speech रो verb रे इच्छी चेंजेस हबो only you just make a statement a farmer always advises his son to be neither a borrower nor a lender b a farmer always advises his son be neither a borrower nor a lender c a farmer always advises his son neither to be a borrower nor a lender d a farmer always advises his son not to be a borrower or a lender. Most appropriate answer is this. Farmer always माने एठी कोन छि गोटे farmer is advising his son तो पिला मन से सजेस्ट एडवाइस दोची कि पिले बोरो करिवनी कि केबे काहा को लेंड करिवनी दबनी कि नबनी काटू ओके so he advises his son so always advises his son that to be neither a borrower nor a we can certainly call a farmer the feeder of the nation. Which of the following acts as a complement? A. Certainly. B. A farmer. C. The feeder of the nation. D. Of the nation. So, what is a complement? Complement होची
a word or a group of word or a clause which completes the which gives you a total meaning of the sentence. ताकू काढ़ी देले सेंटेंस रो माने रहिबन. So we have verb complement, we have object complement, we have subject complement. एठी कौन complement? एठी option C होचे देखो. We can certainly call a farmer. Okay. So what is this? We can call a farmer what? We can call whom? Can call होचे verb टा. हमें what और whom रो जो आंसर दला से object of the sentence of the verb. So we can certainly call whom? A farmer. So this is a farmer is the object of this verb can call. अच्छा. आप object परे direct object परे next कौन आसला? The feeder of the nation. एठी the feeder of the nation काहाकू describe करूची? काहाकू करूची? फार्मर को कुछ who is that farmer? तम तक फार्मर कहि परिबो किंबा तमे कहि परिबो the feeder of the nation. So you can give another name to the farmer. It's a noun clause. That's an object complement. The feeder of the nation is a complement, and what kind of a complement it is? It is an object complement. So you can certainly call the farmer the feeder of the nation. You can certainly call Mahendra Singh Dhoni the greatest captain ever of Indian cricket. So you can certainly call Dhoni. Dhoni is the object of the verb. And who is that Dhoni? He is the greatest subject object of pore rahela seta. So it is a object complement. He is the greatest captain of the Indian cricket. काहाको कुहाउची काहाको describe कराउची काहाको कुहाउची it is धोनी को कुहाउची. The greatest captain जी धोनी सी है. So it is an object complement. ये subject को describe करते बार subject को आउट ना रे कहूतो बा सेटा हबो subject complement. So object complement, subject complement can be either a verb, either a noun or an adjective. So एठी the option C is the right answer. The feeder of the nation is the complement, and because we can certainly call a farmer. वो complement काहे की कुआ गला? You just take this sentence. आर कौन माने रहूची? You can certainly call a farmer. So it is an incomplete sentence making incomplete sense. But the moment you write the feeder of the nation, it gives you a complete meaning. आमे गोटे फार्मर को कहि परिबा से आमको खाइबा को दोची फीड करची देशटा को. Who is a farmer out ना कोन? The feeder of the nation. It's a noun. It's a noun clause. A prosperous farmer is, pick out the correct expression to complete the sentence. A prosperous farmer is A, neither lazy nor procrastinating, both lazy and procrastinating. C, either lazy or procrastinating. D, not only lazy but also procrastinating. So what is the meaning of procrastination? Procrastination is always dangerous. जो माने आको डिले कहती. प्रोक्रास्टिनेशन माने होची डिले और पोस्टपोन. जे कहे आज करमी काली करी ना आज पढ़ी एटा काली पढ़ी आको जो डिले कर पोस्टपोन करी चल दैट्स अ डेंजरस थिंग. सो ये रियली अ प्रॉस्परस फार्मर, ए फार्मर हु इज प्रॉस्परस. को लोकटा प्रॉस्परस हुए को लोक लाइफ रे उठे ये प्रथम स्टेप कॉन्फिडेंटली निए. कोनोसी काम को से पछकु रखेनी. जहाँ करे कथा इमिडिएटली करे से लोक लाइफ रे उठे प्रॉस्पर करे. सो ए रियल प्रॉस्परस फार्मर विथ नाइदर एनी नेगेटिव सेंटेंस से लेजी नुहे से निहाती हार्ड वर्किंग हेतिबो
आ ठीक सही टाइम रे सही काम करथुवा. So he is neither lazy nor procrastinating. So option A is the right answer. कारण both lazy और procrastinating से prosper करिवो से गरीब होई कि तळे पड़थिवो गां दांडरे तास खेलुथुवो. either lazy or procrastinating, either lazy हेतिवो किंबा डिले करथुवो. ए दीटा जाको नेगेटिव क्वालिटी. लेजी और नेगेटिव दीटा नेगेटिव क्वालिटी कौन से लोक गोटे भी नेगेटिव क्वालिटी रहिले will a person ever prosper in life? Certainly not. So not only lazy but also procrastinating. That means not only but also लगिला. Not only but also माने कौन गोटे prosperous farmer से जब खाली lazy नुहे ता संगे संग से सबु बेले कौन सी काम सब पछुक रखे. So the right answer is a prosperous farmer is neither lazy, से lazy नुहे कि कौन सी काम को delay करे. So the most appropriate option is option. Okay. So we have discussed the entire all the 100 questions of SSB PGT. So a question ताको बारंबार all of you must have done it करिथिबा आगुरु आको कल्ला परे जो टाइप रो क्वेश्चन आसुची तो अंदाज करिनियो से भलिया क्वेश्चन आसी हमर भी. So a type रो क्वेश्चन how far you are, how well equipped you are to write the exam. केते भले रे पढिछ. It is never, mind you one thing, it is never खाली MCQ करके तमे जे पढि you will do it. Impossible. और जो quotations गुडा आसुची for example तुम metaphysical poetry रे you have John Donne, you have George Herbert and you have Andrew Marvell. ए तीनटा तमर सिलेबस सबले थाए. तेनु मार्वल करो to his coy mistress, on a drop of dew सेटा गोटे आ गोटे ला गार्डन. एंड्रू मार्वल रे तीनटा पोएम अंतत थरे थरे पढि देथिबो. फर्स्ट पैराग्राफ स्टैंजा पढिबो, लास्ट स्टैंजा पढिबो. मु प्राय देखे जोडा परीक्षा रे आसे आइदर फर्स्ट स्टैंजा टा आसे नइले लास्ट स्टैंजा टा आसे. डाउन पढेला बेले डाउन को प्रिपेयर कला बेले सनराइजिंग समस्त को थिला. तापर गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, फ्ली, कैनोनाइजेशन, ए पोएम गुडा को डाउन कर पढिबो. जॉर्ज हर्बर्ट कर दीटी पोएम सब बेले थाए. गोटे हला द पुली आ गोटे द कॉलर. तो एति की खाली मेटाफिजिकल पोएट्री जे पोएम गुडा पढिबो तो क्वेश्चन से पोएम रु आसीबो. क्वेश्चन आसीबो जे व्हेन वाज कैनोनाइजेशन पब्लिश्ड, व्हेन इट वाज रिटन, गोडा किछि आसु. तो कोविड टाइम रे आस्थला हु वन द साहित्य एकेडमी अवार्ड, हु वन द बुकर्स प्राइज. से प्राइज ये नॉमिनेट फिल्म फेयर अवार्ड, सॉरी साहित्य एकेडमी अवार्ड एगुड़ा किछि. तो तमे जतबे पढिबो मेटाफिजिकल पोएट्री ए पोएम गुडा को पढिया हो. सेमती एज ऑफ एलिजाबेथ रे when you are studying एज ऑफ एलिजाबेथ रे पढिबो शेक्सपियर, मार्लोर का डॉक्टर, बिकॉज ग्रीन पील एमान को पढेनी केबे परीक्षा रे, बिकॉज समान को तुम सिलेबस केबे प्रेस्क्राइब हेनी. मोस्टली which is शेक्सपियर आउट हला मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो. अब मार्लो कर सबु बेले मोस्टली डॉक्टर फॉस्टर्स ही हेता है. आउट हला टैम्बरलेन द ग्रेट. आ शेक्सपियर को कौन पढिबो सेमती एक्ट 1 एक्ट 5 जोरा म आगुर कहि एक्ट 1 एक्ट 5 पढिबो. एक्ट 1 एक्ट 5 रे मेन जे प्रोटैगनिस्ट जेंती मैकबेथ दी जनकर होची इंपोर्टेंट. मैकबेथ, लेडी मैकबेथ. हैमलेट रे it is the soliloquies of Hamlet is important. King Lear रे Lear और Gloucester अंकर पढ़िबो. अंकर डायलॉग्स गुडा मे बी soliloquy, मे बी monologues एगुडा को एक्ट 1 एक्ट 5 गुडा भलो. खाली एई मानकर कैरेक्टर खाली पढ़ी देइथिले 8-10 थर पढ़ी देले हाउ एज ऑफ एलिजाबेथ प्रोज राइटर भीतर
फ्रांसिस बेकन, बिकॉज बेकन एसेस पोस्ट ग्रेजुएशन प्रेस्क्राइब होता है, तो बेकन एसेस गुड़ा ऑफ स्टडीज, ऑफ ग्रेट प्लेसेस, ऑफ मैरिज, ऑफ ट्रूथ, पांच छटा है. Is epigrammatic is terse sentences. सेमती एज ऑफ चॉसर है चॉसर, कैंटरबरी टेल्स, पोस्टली. आउट ऑफ द इटालियन पीरियड जो बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम्स, फेम एगुड़ा टिके टिके देखी मैं ना गुड़ा मन रखी. दैट्स इट. ओके, so I hope I have tried my best to explain to you with reason and logic why it happens. So this is all for today's class. What ठीक ठाक है? Are you satisfied? Tell me. Are you all satisfied? Come on, write on a chat box and let us wind up. Grammar रे सेमिति किछि कष्ट न. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मल्टीपल चॉइस माने प्रॉब्लम किछि नै. जो लेखिबार थाए सेठी तमरो टिके प्रॉब्लम रहइबो, किंतु मल्टीपल चॉइस किछि नै. तम ऑलरेडी तुम किछि जो जगह कंफ्यूजन हबो तुम ताको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कर दबो. ओके, so thank you very much. Let's wind up. See you tomorrow, day after tomorrow, Friday. Friday आम केतोड़े MCQ करिबा, preface to Shakespeare, preface to lyrical ballads, आउ इटा the study of poetry Arnold. तीन जन को खाली केतरा अल्प केतरा MCQ करिबा.